Hi everyone, welcome you back in this physics video, and today's video we are going to learn about the calculation from the graphs, and thereafter we will solve numerical which is based on it. So first, this is velocity time graph. So in this velocity time graph there is a line which is parallel to that time axis. So that means that velocity is going to be constant on this line. So if velocity is constant, then directly it is meaning over there acceleration is going to be zero. Okay, so over here, if I suppose that there is a time which is between O and A, so in this time that the velocity it remains same. So I have taken a perpendicular, and there this perpendicular it is meeting at point B. Okay, now over here that what the area under this line, this is CV line, this will give to us. So we will say that this is going to be the shape of rectangle. So area of rectangle is equal to length into breadth. So length it is over there OA and breadth is there AB. So length is T and breadth is, this will give us the value of velocity. So we get that velocity into time. So velocity into time, this is displacement. It means that a velocity time graph and a line which is parallel to time axis. So the area under of this will help you to calculate displacement. Okay, now let us to take over here. This is the second graph which is between displacement time, and we get a straight line graph. Okay, so there is a slope OA, so which is at an angle theta with this time axis. Okay, so now I'm going to suppose over here that when the time has changed from O to C, so then the displacement is equal to OD, and the perpendicular to it I have taken that it is meeting at A, and from there a perpendicular is drawn to C. Okay, so thus we got over here this that under the slope, under the slope okay, so you will find that this is a shape of a triangle. Okay, now we have to find out what this slope will give us. So therefore slope is determined with the help of the tangent of the angle, and it is perpendicular upon my that base. So perpendicular, it is that side which is on axis gives us a displacement, while base is that time axis. So this will give us the value of time. So therefore it is going to be displacement upon my time, and which will be equals to velocity. So it means that tangent of the slope will give you velocity. Okay, now next over here that we are getting this graph. Okay, so what this graph will help us to calculate velocity time graph. Okay, so this graph you will find over there that when the time changes from O to T, so draw a perpendicular over here on this axis. Okay, so this point I am going to say that it is OC. Okay, so that uh, the area under this graph, what will it help you to find out? Okay, so you will find that this is area of the graph, area of graph. So it is equal to that the shape we are looking, it is there two sides are parallel, and there is the perpendicular distance between them. So we said over there that it is that sum of the parallel side. So sum of the parallel side, it is OA plus BC, sum of the parallel side into perpendicular distance between them. So perpendicular distance that it is that OC over there upon 2. Okay, so this is the area of that trapezium which we are getting. Now you will find over here this is OA plus BC. What thing is given by these two sides? Okay, so we will find that in vertical axis the measurement will be of velocity. तो इसका मतलब OA और BC जो है वो velocity की measurement दे रही है, and that x axis OC that what measurement it is giving to us, this is of time. So then generally we are going to say it is velocity into time. Velocity into time it means अगेन टू से दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो क्या बन गया ये दैट इट इज़ अगेन
that displacement or either distance that we can call it. तो इसलिए displacement जो है आप यहाँ से find out कर सकते हो if velocity time graph is given of such type. Okay, now let us to take one more example. This is velocity time graph and there is a slope of the graph. Okay, so this is at an angle theta and this is point A. Okay, now over here that when it is at point A, so it has taken the time, so perpendicular drawn, this will tell us the time, and this perpendicular on vertical axis will give us the value of velocity. तो origin से वो कितने मतलब कि उस पॉइंट ए के ऊपर उसकी velocity क्या है, ठीक है. So now over here that this OA, तो OA it is said to be the slope, and slope will calculated by this tangent of the angle, and which in turn is equal to, तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर ये इसको बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, सो इट इज़ ए बी अपॉन में ओ बी, एंड ए बी मीन्स उस वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी की वैल्यू बताता है, and this OB will give us the value of time. Okay, so we are getting it is velocity upon में time. So therefore this is going to be acceleration. This is acceleration. So that means to say over here if we are getting a straight line graph in velocity time, so therefore this slope will help us to determine acceleration. Okay, so these that graphs which is discussed by us, and what the value we can calculate it, so that we come to know. Now let us to solve it over here that numerical which is based on them. Okay, let us to suppose over here that this is the speed time graph which is given to us, and the time it is 0 second over here, and 5 second and 10 second, while the speed it is in meter per second, and which is said over here 12. That means, and at this point that speed it is going to be 12 meter per second at this point, and that time when it is going to be at this position, so it is of 5 second time, it is measured in seconds. Okay, so first thing, if it is said to us that how much is the distance traveled over here between 0 to 10 second, ठीक है, तो how we will calculate this distance between 0 to 10 seconds. Okay, so this interval of time, so we will find over here that the area under the graph will help us to determine this distance. Okay, as already said in previous कि हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या करेगा, उस जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ग्राफ, so this will be equal to, now you will find over there हमारे पास एरिया यानी कि ये क्या बनी, एक ट्राइंगल बनी, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है 1/2 बेस, तो बेस इसका क्या बना, दैट इस पूरी ट्राइंगल का बेस क्या है 0 और 10 के बीच का गैप, दिस विल गिव अस द बेस. ओके, सो इट इज़ 10 minus 0, and that height, so height of this triangle it is that you will get it is equal to 12, so this is into 12. Okay, so thus it is going to be cancelled and we get it is 10 into 6, it is 60. So this is in standard unit meter. So this area of graph is equal to 60 meter, and meter it is distance. Okay, so thus we got over here that a distance from that graph. Now let us to take over here this second point. What is the average speed? If we have to find out the average speed, so average speed is what? So as already we are known, it is total distance upon में that total time taken. ठीक है, तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितनी देर में ट्रैवल किया, सो दैट विल गिव अस एवरेज स्पीड. सो हेयर दैट टोटल टाइम इट इज़ बिटवीन 0 to 10, तो टोटल टाइम बना इसका 10 सेकेंड का, और 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 मीटर का. ठीक है, सो दस वी गेट दिस इज गोइंग टू बी 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज अवर एवरेज स्पीड. ओके, नाउ सेम फ्रॉम this graph, let us suppose that if it is that the time when the speed was minimum, ठीक है, तो जो स्पीड थी वो मिनिमम कब थी, सो यू विल फाइंड ओवर हेयर
वैसे ये कंडीशन, ये ग्राफ कब बनता है? व्हेन एनी बॉडी इट इज़ ड्रॉप्ड डाउन, ठीक है। जब किसी भी बॉडी को हम नीचे ड्रॉप करते हैं तो पहले तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है तो उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम, और बाउंस बैक होने के बाद ये क्या करता है, इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो दैट वी हैव टू टेल व्हेन स्पीड इज मिनिमम, व्हेन स्पीड मिनिमम, तो मिनिमम कब है? सो यू विल फाइंड ओवर हेयर, जब ये ओ से इस पीक की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो उसकी स्पीड सबसे कम कहाँ थी, जब टाइम जीरो था। यहाँ पर टाइम क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो इसलिए लिखा मैंने टाइम वॉज 0 सेकेंड, तो उस वक्त तो उसकी स्पीड मिनिमम थी। एंड देयर आफ्टर दैट फ्रॉम द आफ्टर बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक के बाद ये क्या करता है, ज़मीन से ऊपर की तरफ को मूव करता है। तो जैसे ही ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। एंड व्हेन इट इज़ एट मैक्सिमम हाइट, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जीरो मतलब कि मिनिमम होगी। तो मिनिमम कब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, 10 सेकेंड में। तो इसलिए एंड टी इक्वल टू 10 सेकेंड, सो दस वी कम टू नो ओवर हेयर कि व्हेन द स्पीड इज गोइंग टू बी minimum. Now let us to take over here one more case. It is when the speed is maximum, ठीक है। तो जो स्पीड है वो कब मैक्सिमम होती है, व्हेन। सो यू विल सी ओवर हेयर कि इस पूरे ग्राफ के अंदर जो स्पीड है वो कब मैक्सिमम हो रही है, कौन से टाइम के ऊपर मैक्सिमम हो रही है। सो यू विल सी दैट एट टाइम 5 सेकेंड स्पीड इज 12, and there is no other time where the speed is 12 or more than 12. Okay, so thus we can reply for this one that at t is equal to 12 seconds, sorry, it is not 12 second but it is 5 second. Okay, this will be our answer. Okay, so in this question number 2 we have to draw velocity time graph, BT graph, and we have to find out the total distance. ठीक है, पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस वहाँ से जो ट्रैवल किया गया उसको फाइंड आउट करना है. सो लेट अस टू रीड द स्टेटमेंट. सो इट इज़ सेड दैट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, तो क्या करना है, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. तो इसलिए इनिशियली आई एम गोइंग टू कंसीडर दैट लेट अस टू हैव दिस साइड इट इज़ टाइम and this side we are taking velocity. Okay, so it is in vertical axis, so velocity it is in meter per second while the time is taken in seconds. Okay, now it is said that कि जो velocity जो body है वो क्या करती है, start करती है from rest and accelerate uniformly along a straight line at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर for 5 सेकेंड. ठीक है, तो ये ओरिजिन हमारे पास आया. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये कहाँ से शुरू कर रही है, दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, तो ये यहाँ से जैसे स्टार्ट करती है, उसके बाद क्या करती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे शो करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से. लेकिन कितनी देर के लिए ये इस एक्सेलरेशन से चलती है, दिस इज़ फॉर 5 सेकेंड. ठीक है, कितनी देर के लिए ये चलती है, 5 सेकेंड. सो ही रीचेस टू दिस पॉइंट. So how much time he has taken? It is of 5 seconds. ठीक है. Now acceleration in this region it is said to be 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. Okay, so there was a uniform acceleration. Now after of it says that it moves for 2 seconds with a uniform velocity ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद ये क्या करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी बनेगा वो. तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होगा, इस तरह से टाइम एक्सिस के पहले एक लाइन आएगी. लेकिन कितनी देर के लिए वो इस वेलोसिटी से चलता है, दैट इज़ ओनली फॉर 2 सेकेंड. तो 5 सेकेंड ऑलरेडी उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए लिए थे, यहाँ तक जाने के लिए उसने 2 सेकेंड और ले लिए. तो इसलिए टोटल कितना हो गया, 7 हो गया. ठीक है, 5 + 2 7 सेकेंड्स हो गए. एंड हाउ मच वॉज द स्पीड विद विच इट वॉज मूविंग ओवर हेयर. तो इसकी जो स्पीड थी यहाँ पर, इट इज़ सेड ओवर देयर दैट 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये ऑलरेडी लिखा गया 50 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, और उसके बाद वो यूनिफॉर्मली जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है. ठीक है, तो रिटार्डेशन हो रही है. तो रिटार्डेशन हो रही है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है
जो रेफरेंस पॉइंट से और उस ओरिजिन से दूर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह से। एंड देन इट इज़ आल्सो सेड टू अस कि इट कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 3 सेकेंड में। तो इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितना टाइम लिया था 7, और रेस्ट पर आने के लिए उसने और कितना सेकेंड लिए 3 मोर सेकेंड। तो इसलिए 7 + 3 मीन्स 10 सेकेंड, ठीक है। So over here it is O, here it is B, A, B, and let it be C. Okay, now we are getting that what will be the total distance traveled. तो as we are known over here कि जब भी आपको टोटल डिस्टेंस अब निकालना है, सो दिस विल बी द एरिया, ठीक है। सो देयर यू कैन डू वन थिंग, या तो आप इसको 3 एरियाज सपोज करके चलो, जिसमें एक ट्राइंगल होगी, एक रेक्टेंगल होगी, एक ट्राइंगल होगी, ठीक है। हाँ, अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग कि इसको ट्रेपेजियम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इट इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 दैट सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो टाइम एक्सिस है और उसके पैरेलल यहाँ पर ए बी आ गया, ठीक है। तो इसलिए ए बी की वैल्यू भी कहाँ से मिलनी है आपको, यहाँ पर टाइम एक्सिस से ही मिलनी है, ठीक है। सो दस वी विल से ओवर हेयर, क्योंकि टाइम और टाइम ही आपस में ऐड हो सकते हैं, टाइम और स्पीड ऐड नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस साइड की लेंथ कितनी बनी 10, प्लस ए बी की लेंथ कितनी है, इट इज़ दैट 7 - 5 2, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी बनी, तो इट इज़ 7 - 5, तो ये लेंथ आ गई इसकी यहाँ पर 2। सो ओवर देयर इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट इज़ इक्वल टू 50। So then multiply it with 50 and we got it as that of 12। 12 को 6 से मतलब डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 6 आएगा, 6 × 50 एंड विच इज़ ऑफ 300 मीटर। ओके, सो दिस इज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड in this graph. Okay, so over here velocity time graph is given to us. So here you will see that from O to A there is uniform acceleration, A to B. So this is going to move with the constant velocity. Thereafter that means there is no acceleration, and B to C it is going to decrease. Velocity decreases uniformly, and at C it comes to rest. Okay, so timing also given to us in 7 second the body comes to at rest. So according to the question you have to draw this acceleration time graph, ठीक है। तो acceleration time graph अगर हमने ड्रॉ करना है, so we should to know over here कि O से A के बीच में उसकी acceleration कितनी थी, A से B के बीच में acceleration कितनी है, और B से C के बीच में acceleration कितनी है, ठीक है। So let us to calculate it first. So first part between O A, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, एसेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ओवर देयर एसेलरेशन व्हाट इज इक्वल टू, तो एसेलरेशन आपने निकालनी है तो स्लोप से निकलती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, सो दिस इज परपेंडिकुलर सेक्शन, तो वेलोसिटी आ गई यहाँ पे दैट 20। तो 0 से 20 में चेंज हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ 20 अपॉन में दैट change in time. So you will find that it is between 2 and 3. So this is not that exactly 3 or 2. So this is going to be between of them. So that time means time is of 2.5. Okay, so it is in the mid. So it is change in time is there. So thus we can have this is done 20 by 2.5. So if we remove that decimal, so then we get it is as 8 meter per second का square. Okay, this is acceleration between O and A. Okay, now second part over here between this A and B, how much is that acceleration. So we are looking over here, velocity is constant. Okay, so velocity is constant, that means acceleration is 0 in that region. Okay, now the third part, so third part over there that it is between this B and C. Okay, so between this B and C, ये between के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बिटवीन बी एंड सी। तो इसमें क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। ओके, सो यू विल फाइंड दैट हाउ मच इज दैट रिटार्डेशन, सो दैट इट इज चेंज इन वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी एट सी, इट इज फाइनल वेलोसिटी
बी से सी के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो सी पे फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी बी मानी जाएगी, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी जब ये बी के ऊपर था दैट वाज 20. सो अपॉन में हाउ मच वॉज दैट चेंज इन टाइम, सो यू विल फाइंड ओवर देयर फाइनल टाइम था 7 और जब ये बी के ऊपर था तो उस वक्त टाइम था 5 सेकेंड, सो इट इज़ 7 - 5 एंड दस वी गॉट ओवर हेयर इट इज़ -20 अपॉन में माइनस +2 एंड विच इज़ इन टर्न -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. ओके, सो दस वी कैलकुलेटेड दिस वन -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. सो दीज आर द थ्री एक्सेलरेशंस विच वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हेयर. ठीक है, तो ये तीन एक्सेलरेशन. नाउ लेट अस टू ड्रॉ दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. So this side it is acceleration and this side it is time. Okay, now see over here, upside that acceleration will be positive. ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपने क्या करना है, अप साइड शो करनी है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास डाउन साइड में आ जाएगी. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. नाउ एज वी हैव टेकन ओरिजिन से ए तक उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, सो इट वाज 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 8, तो इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस तरह से आप शो करोगे, इट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. और ये कितनी देर के लिए चलती है, 2.5 सेकेंड के लिए. सो ओवर हेयर दिस इज गोइंग टू बी ओनली फॉर 2.5 सेकेंड. ठीक है, दिस इज द टाइम एंड आफ्टर ऑफ दिस इट बिकम्स जीरो. कितनी देर के लिए जीरो हो जाती है, सो वी आर गेटिंग ओवर हेयर कि इट इज़ गोइंग टू बी जीरो फॉर 2.5 मोर सेकेंड. ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये हमारे पास 3, 4, 5. ठीक है, तो अप टू 5 सेकेंड उसकी एक्सेलेरेशन क्या होती है, जीरो होती है. एंड फ्रॉम 5 to 7 इसमें क्या हो गया, रिटार्डेशन. लेकिन रिटार्डेशन कितनी होती है, -10 की होती है. सो देयर फॉर आफ्टर 5, ठीक है, तो 5 से ये -10 आपने नीचे की तरफ लेके आना, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है इसमें, दैट इज़ रिटार्डेशन. और कितनी देर के लिए रिटार्ड होता है ये, 2 सेकेंड के लिए. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से आपने शो करना है. ठीक है, सो अप टू 7 दैट यू हैव टू शो दिस वन. ठीक है, सो दस वी गेट दिस वैल्यू ओवर हेयर इट इज़ -10. दिस इज द वैल्यू एट दिस पॉइंट. ओके, सो दस वी हैव ऑब्जर्व दैट जो एक्सेलरेशन है उसका जो टाइम के साथ वेरिएशन ग्राफ है वो how we can draw this one for that a given question. Okay, so that's all from my today's video. Thank you for watching it.